How to install a screensaver file in Windows। इस वीडियो के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको स्क्रीन सेवर इंस्टॉल करना बताऊंगा। सेकंड पार्ट में स्क्रीन सेवर को विंडो पर अप्लाई करेंगे एंड थर्ड पार्ट में स्क्रीन सेवर अनइंस्टॉल करना बताऊंगा। Many screensaver are available online in a file format named .scr। Double click to open Google Chrome। Click Google search bar and type screensaver file download and press enter key on your keyboard। Click first link screensaver for Microsoft Windows। Enter screensaver for Windows, you can download anyone। I downloading 3D Maze। Click 3D Maze screensaver। Click download button। Save your screensaver file anywhere on computer where you want. And then click Save button. Go to the file destination, click File Explorer, click Download folder and then click Compress folder. To uncompress your file, right click the file and click Extract All. Click Extract button. Right click the screensaver file and click Copy। स्क्रीन सेवर फाइल को कॉपी करने के बाद इसे कंप्यूटर की रूट डायरेक्टरी सी ड्राइव के system32 फोल्डर में फाइल को पेस्ट करना है। क्लिक लोकल डिस्क सी एंड देन क्लिक विंडो फोल्डर। स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड द system32 फोल्डर। क्लिक system32 फोल्डर, राइट क्लिक द ब्लैंक स्क्रीन एंड क्लिक पेस्ट। Click Continuous button on dialog box because you need administrator permission. Close Windows. Right click the screen and click Personalize. Click Lock Screen tab. Scroll down and click Screen Saver Setting. Under Screen Saver heading, click None and click on your installed Screen Saver name. Click Apply and then click OK button. Now your screen saver is applied on your PC. In third part, how to uninstall installed screensaver on your PC. Go to File Destination, click File Explorer, click Local Disk C, click Window folder, find System32 folder and click on folder. Type the file name in search bar and press enter. Right click the file name and click delete. Click continuous button. Now your screensaver file is deleted on your PC.